Hello dear students of class 12. Once again I welcome you all in this session of online classes. So as you all know, we are doing our chapter number 5, continuity and differentiability, and till the very last lecture we have winded up exercise 5.7. Today we shall be doing exercise 5.8, and the concept which will be used in this exercise or which is used in this exercise is based upon these two theorems. First one is Rolle's theorem and second one is mean value theorem. Now before solving the questions, let us see these theorems, the statement of this theorem. First of all, we shall study Rolle's theorem. The Rolle's theorem says like this: let f be such that f एक कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा, let f be such that its domain is closed interval a to b to r. This r is range and this r denotes real numbers. यहाँ पे r denote क्या करता है? Real numbers. और ये है क्या? Range. ऐसे करके जो हम denote करते हैं, that is domain and range. That is f be such that closed interval a to b to r, that is real numbers, be continuous on a closed interval a to b. आपके पास कोई भी f एक फंक्शन गिवन होगा आपके पास. आप लोग को रोल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है? सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वो फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b. सेकंड वन, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b such that f of a is equals to f of b, then there exists some c value in open interval a to b such that f dash c is equals to 0. The statement is, अगर आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो आपके पास जो फंक्शन, आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी, यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है. फर्स्ट, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b. सेकंड वन इज इट शुड बी डेरिवेबल, दैट इज डिफरेंशिएबल, उसकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a to b. एंड third one is one more condition should be satisfied, that is f of a is equals to f of b. If all these conditions are satisfied, then there must exist some value c, कोई भी एक वैल्यू c एग्जिस्ट करनी चाहिए, which lies in between open interval a to b, जो किस बीच में लाई कर रहे हैं? ओपन इंटरवल a to b, such that f dash c is equals to 0. इस कंडीशन के हिसाब से आप लोग c की वैल्यू निकालेंगे जो इस ओपन इंटरवल a to b के बीच में लाई करना चाहिए. If all these conditions satisfies, we say the Rolle's theorem is verified. Now mean value theorem. Similarly, mean value theorem is there. Mean value theorem, let f be such that open interval a to b tends to r, be a continuous function on closed interval a to b. सबसे पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए? सेम, शुड बी कॉन्टिन्यूअस. वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने 5.1 में भी कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होते हैं, और पिछली क्लास में भी आप लोगों ने 11th क्लास में लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है. तो अगर एक फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है on closed interval a to b and differentiable on a to b open interval a to b. थर्ड कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पे एब्सेंट है. यहाँ पे फ्रेंड्स तीन कंडीशंस है रोल्स थ्योरम में, यहाँ पे केवल ओनली टू कंडीशंस आर देयर. दिस कंडीशन इज एब्सेंट इन मीन वैल्यू थ्योरम on open interval a to b. Then there exists some value c in open interval a to b such that their condition was f dash c is equals to 0, and here condition is f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. So these are two theorems, Rolle's theorem and mean value theorem, which will be used in the questions of exercise 5.8. You can note down these theorems. After that, we will be doing some questions. Now, friends, let us start the very first question of exercise 5.8. The first question is, verify Rolle's theorem for the function f of x is given to you. One function is given to you, x square plus 2x minus 8. X square plus 2x minus 8. And here x belongs to closed interval minus 4 to 2. So, जो यहाँ पे x है वो कहाँ, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है? क्लोज इंटरवल -4 to 2. You very well know closed interval means -4 and 2 will also be included. Open interval means
और in between those values, वो values included नहीं होती, those values are excluded, and in closed interval these values are included, you know, because you have studied in this in your previous standard, that is 11th standard. So this function is given to you and you have to verify Rolle's theorem for this. As you all know, we have just written the statement of Rolle's theorem. Fx is given to you this. First of all, the first step you have to do in this is find out f dash x. As the name of the chapter is also derivatives, differentiability. So find out the f dash x. Write down the f dash x. X square की differentiation 2x plus 2 as it is, x की differentiation 1. So f dash x is equals to 2x plus 2. First thing you have to find out is f dash x is equals to 2x plus the value here came is 2x plus 2. Now students, first condition was, as you have just seen, there were three conditions: continuable, differentiable, and f is equals to fb. First condition is it should be continuous. What is the condition of continuous, friends? You have not to prove the whole procedure of continuous. There is one simple, very basic concept. If any function is a polynomial function, then it is also continuable. It is also continuous. Means वो continuous भी होगा. ये simple से theorem है जो आपके पास इस chapter में भी है. If a function is polynomial function, then it is also a continuous function. So this theorem we will write down here. This statement we will write down here. You can write down the first point, means 3 points we have to satisfy. So you can write down, being a polynomial function, as we all know students, this function is polynomial function. The condition for polynomial is the power of variable x should be a whole number. So all the numbers are whole number. So being a polynomial function, जो आपके पास given function है वो क्या है? Polynomial function. So being a polynomial function, f is continuous on closed interval -4 to 2. Theorem की statement क्या थी students? It should be continuous on closed interval -4 to 2. So this was the first condition which is satisfied. उसको continuous prove करना था. तो अगर ये polynomial function है तो सीधी सी बात है कि वो continuous भी होगा. So first point is done. After that, second point, this you have to prove that this function should be a derivable, that is differentiable. So you have to write down. So देखिए यहाँ पे f dash x की वैल्यू आपके पास आ रही है, एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. So you can write down f dash x uniquely exists on open interval -4 to 2. So देखिए जो आपके पास यहाँ पे f dash x की वैल्यू आ रही है वो एग्जिस्ट कर रही है, मींस एक यूनिक वैल्यू आ रही है, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है हर एक वैल्यू के लिए -4 to 2. इन क्वेश्चन इट इज गिवन 2. देखिए स्टूडेंट, इनमें से अगर सारी वैल्यूज के लिए, अगर आप कोई भी वैल्यू के लिए अगर आप f dash x को निकालो, मान लीजिए आप -4 यहाँ पर पुट करें, -4 नहीं करना है, वैसे ओपन इंटरवल है, -3 -2 -1, कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करें तो हर एक में आपको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू मिलेगी. सो अगर आपको यूनिक वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल. सो देयरफॉर fx इज differentiable on open interval -4 to 2. According to theorem, it is differentiable on -4 to 2 because यहाँ पे अगर आपकी हर एक वैल्यू के लिए कोई यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर आपको जो वैल्यूज गिवन है x की, उन हर एक यूनिक वैल्यूज के लिए अगर f dash x की यूनिक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, दैट मींस इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to 2. सो सेकंड पॉइंट इज आल्सो वेरीफाइड. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. Third point was f of b is equals to f of a or f of a is equals to f of b. So see, the condition is given to us. These limits are a and b. Lower limit is a and upper limit is b. So first of all, let us find f of a. F of a is f of -4. So f of x students आपके पास देखिए ये वैल्यू है. f of x की वैल्यू क्या है? x square plus 2x minus 8. तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है आप लोगों ने? -4. So -4 का स्क्वायर प्लस 2 into -4 -8. -4 का स्क्वायर is 16 -8. So 16 minus 16 is equals to 0. After that, we have to find out f of b. F of b means f of b, the upper limit आपके पास क्या given है? 2 given है. So f of 2 is equals to, put down the value 2 square. ध्यान दीजिएगा f of x में पुट करना है, f dash x में नहीं. देन प्लस 2 into 2 -8. 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 minus 8. So 8 minus 8 is equals to
0. So both values are same, that is f of a, that is f of minus 4 is equals to f of 2. ये दोनों वैल्यूज आपके पास कैसी आ रही है स्टूडेंट्स? इक्वल वैल्यूज आ रही हैं. So that means and write down therefore f of minus 4 is equals to f of 2. So here you can write down since all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. जितने भी रोल्स थ्योरम की कंडीशंस थी वो सारी की सारी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं. देन कंडीशंस इन थ्योरम के आगे स्टेटमेंट क्या थी? देन देयर एग्जिस्ट a value c such that, क्या स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स आपके पास रोल्स थ्योरम में? देन देयर एग्जिस्ट a value c which belongs to minus 4 to 2, जो इनके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सच दैट f dash c is equals to 0. f dash c is equals to 0. हाँ जी, तो f dash c निकाल लीजिए. देखिए f dash x की वैल्यू आपके पास है 2x plus 2, तो यहां पे x की जगह क्या पुट कर दीजिए? c पुट कर दीजिए और वहां से c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2c plus 2 is equals to 0. इसको सॉल्व कीजिए, यहां से c की वैल्यू फाइंड कीजिए. 2c is equals to minus 2 and value of c will be minus 1. 2 अपॉन में आके क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ c is equals to minus 1. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि जो c की अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो वहां पे एक वैल्यू c एग्जिस्ट करनी चाहिए जो इनके बीच में लाई करनी चाहिए. दैट मस्ट लाई बिटवीन minus 4 to 2. तो जो आपके पास c की वैल्यू आई है minus 1, कब इसके बीच में लाई करती है? minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Of course, this value lies in between minus 4 and 2. So that means this theorem is verified. In the last, you have to write down. Hence, it is visible. Yes, hence, Rolle's theorem is verified. Hence, Rolle's theorem is verified. In this manner, you have to write down the whole statement. If this question comes of 4 marks weightage, this is the solution of the very first question. Now we'll be doing one more question which will be based upon mean value theorem. Let us do question number 4. And in question number 4, f of x is given to you as x square minus 4x minus 3, where x belongs to closed interval. Yes, closed interval 1 to 4. Because it is given that x belongs to a to b, where a is given to as 1 and b is given to you as 4. a की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है और b की वैल्यू आपके पास 4 गिवन है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? सर, इट इज क्लोज इंटरवल 1 to 4 क्लोज इंटरवल हो जाएगा. जी हाँ. सो आफ्टर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू सेम प्रोसीजर फ्रेंड्स एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. वी विल फाइंड आउट f dash x. सो f dash x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x minus 4 because the differentiation of x is 1. So here the जस्ट लिसन, मैंने क्या समझाया था आप लोगों को? रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या डिफरेंस है? इन रोल्स थ्योरम वी हैव टू सेटिस्फाई द 3 कंडीशंस, बट इन मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव टू सेटिस्फाई ओनली फर्स्ट 2 कंडीशंस. f of a and f is equals to f of b is not at all included in this theorem. So first condition is, पहले क्या है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. सो यदि आपके पास फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, सो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन f is continuous on closed interval 1 to 4. 1 to 4. यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 1 और अपर लिमिट क्या है? 4. सो इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन क्लोज इंटरवल 1 to 4. सेकेंडली, f dash x यूनिकली एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 1 to 4. सो देखिए, जो आपके पास यहाँ पे f dash x की वैल्यू आ रही है, अगर आप इस ओपन इंटरवल 1 to 4 से 2, 3 कुछ ही वैल्यू पुट करें तो आपके पास यूनिक वैल्यूज मिलेंगे f dash x की. सो अगर ये यूनिक वैल्यूज आपको मिल रही हैं, दैट मींस f of x इज डिफरेंशिएबल ऑन
this open interval, open interval 1 to 4. Now, this condition is not at all in mean value theorem because this condition was in now the conditions for this mean value theorem were only these two conditions. So since all these two conditions are satisfied, you can write down since f satisfies all the conditions या both conditions, कुछ भी लिख सकते हैं, all the conditions of mean value theorem then there exists a value c which belongs to what is the limit given to us? Yes, open interval 1 to 4. ये वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए? Not closed interval 1 to 4 but open interval a to b, so which belongs to open interval 1 to 4, such that this is st means such that condition here is in Rolle's theorem condition is f dash c is equals to 0. यहाँ पे जो c की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए given condition से, वो क्या आनी चाहिए? इस open interval के बीच में लाई करनी चाहिए. So let us check. F dash c is equals to f of b minus, so since what is b here? 4, so f of 4 minus f of 1 upon 4 minus 1, that is b minus a. So f dash c is equals to f dash c में students इस f dash x में x की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है? c पुट करना है. ये रहा f dash x, यहाँ पे x की जगह c पुट कर दीजिए. So 2c minus 4 is equals to f of 4. अब फंक्शन में 4 पुट कर दीजिए. So in rough we are going to solve, or you can write down in fair also in the side, right hand side, f of 4 square, that is 16, minus 4 into 4 is 16 again, minus 3. So this will give you minus 3. So minus 3 minus, now f of 1 let us find out. X की जगह 1 put कर दीजिए. 1 का square is 1, minus 4 1s are 4, minus 3. So 1 minus 7 will give you minus 6. It will give you minus 6. So upon 3, 2c minus 4 is equals to minus 3 plus 6. So see, minus 3 plus 6 will give you 3 only. So 3 and 3 upon 3 will be 1. So that means 2c minus 4 is equals to 1. And after that we can solve it little bit. 2c is equals to, minus 4 will be right hand side shifted. 1 plus 4 is 5. So c is equals to 5 by 2. So what is the value of 5 by 2? That is 2.5. 2.5. So देखिए क्या ये जो वैल्यू 5 by 2 है वो इस ओपन इंटरवल के बीच में आ रही है. 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 1.1, 1.2, 1.3 up to 3.9. So is this 3.9 and up to so on? So is this value 5 by 2 2.5? Of course, because 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2.5. So this value exactly lies in between 1 and 4, open interval 1 and 4. So since this value is lying between open interval 1 to 4, so that means the theorem is verified. So you can write down in the last. Hence, the mean value theorem is verified. This statement you have to write down in the very last. There is not space, so I have written just on the left hand side. So this manner you have to attempt this question. In Rolle's theorem, there were 3 conditions which were to be satisfied. In mean value theorem, you have to satisfy 2 conditions. After that, the very last condition, which is to be useful to find out the value of c, which must exist between this open interval a to b, that is 1 to 4. So we have proved this question. So today, students, we have done 2 questions from exercise 5.8. One is based upon Rolle's theorem and another is based upon Lagrange's mean value theorem. So in the next lecture, we will be doing miscellaneous exercise of this chapter. Since now remaining questions are just similar to these questions because all are based upon Rolle's theorem and mean value theorem. So like those questions you can do on your own also. And if there is any problem, you can ask again in the WhatsApp group of the school. So thank you. Till then, take care and have a nice day.